Hello everyone, welcome to our Vision Institute. I welcome you all to our YouTube channel. Welcome to Daily Dose of Vocabulary based on the Hindu editorials, and like every day I'm again here with top 10 vocabulary words based on the Hindu editorials. And let's see what is our motivational line for today. For today our motivational line is don't wish it were easier, wish you were better. So, what is the inner meaning of this motivational line? Let us get motivated in the morning with this motivational line. Let us first understand the line. Don't wish it were easier. तो आपको ये विश नहीं करना चाहिए कि आपने जो किया था मे बी आपने कोई एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया था, राइट? सो यू सेट फॉर एन एग्जामिनेशन, मेड बी एनी एग्जामिनेशन, अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल. सो यू सैट फॉर अ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन एंड यू जनरली हम लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम देने के बाद एग्ज़ाम देकर आके सोचते हैं कि अगर थोड़ा क्वेश्चन पेपर इजी होता तो कितना अच्छा होता, राइट? तो मेरा एग्ज़ाम थोड़ा अच्छा जाता. सो यू शुड नॉट विश दिस, वी शुड नॉट विश दिस, वी शुड रादर विश दिस, दैट विश यू आर बेटर. तो हम लोगों को ये विश नहीं करना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर अगर इजी होता तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा होता. तो हम लोगों को रादर ये विश करना चाहिए कि अगर मैं थोड़ा अच्छा प्रिपेयर कर लेती तो शायद मैं सारा आंसर्स दे पाती, सारे आंसर्स कर पाती, राइट? सो मैं अगर बेटर होती, ये मुझे ज़्यादा सोचना चाहिए. तो मेरा प्रिपरेशन नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जब मैं बैठूंगी तो मेरा प्रिपरेशन वैसा लेवल का होगा. लेकिन अगर मैं सोचती रही कि अगर क्वेश्चन पेपर इजी होता तो मेरा एग्ज़ाम होता, मेरा प्रिपरेशन ठीक ही था, तो मेरा क्या होगा, मेरा नेक्स्ट एग्ज़ाम में जाकर भी मेरा परफॉर्मेंस वही होगा. बिकॉज आई विल नॉट चेंज माई प्रिपरेशन, आई विल नॉट वर्क हार्ड, आई विल थिंक दैट माई परफॉर्मेंस इज़ वेल. एग्ज़ाम पे क्वेश्चन पेपर थोड़ा डिफ़िकल्ट था, वो ईजी होता तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता, राइट? सो इफ़ दिस इज़ योर अप्रोच, इफ़ दिस इज़ योर characteristics, this is your nature, then you are not going to come out with flying colors, guys, right? So you have to change your approach, you have to change your pattern of studies, you have to change your mentality. Only then you can get better results, right? So with this motivation for today, let us start our session. Let us see what is our first vocabulary word for today. Our first vocabulary word for today is salubrious. Salubrious is an adjective जिसका मीनिंग हिंदी में होता है स्वास्थ्यप्रद. और you can say something that is good for you or is beneficial to mind or body, right? So ऐसा कोई चीज़ जो कि आपके लिए अच्छा है, आपके माइंड के लिए, आपके बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है, मतलब आपको बेनिफिट देने वाला है. दैट इज़ कॉल्ड salubrious. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं medicinal, tonic, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं. एंटोनिम्स हो सकते हैं unhealthy, insalubrious. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Vegetables are salubrious foods which provide essential nutrients. तो वेजिटेबल्स जो है ये हमारे शरीर को बहुत बेनिफिट्स देता है, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, राइट? सो इट इज़ अ salubrious food which provides essential nutrients to our body, right? That is called salubrious. Our next word is grisly. Grisly is a very common word. Let me tell you again, grisly ये word हम लोग बहुत बार पहले कर चुके हैं, फिर भी मैं और एक बार बता देती हूँ. Grisly is an adjective जिसका मीनिंग होता है डरावना या फिर क्रूर. You can say in English causing horror or disgust, right? तो डरावना basically grisly means डरावना. Synonyms इसके हो सकते हैं gruesome, ghastly, frightful, horrid. Antonyms हो सकते हैं pleasant, attractive. These can be the antonyms. How to use it in a sentence? Because the crime scene video was extremely grisly, the television station decided to not air the footage. तो क्राइम सीन का जो वीडियो था वो बहुत ही ज़्यादा ग्रिसली था, दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा डरावना था. इसके वजह से क्या हुआ, टेलीविज़न का जो स्टेशन था, दैट मीन्स द टीवी चैनल डिसाइडेड नॉट टू एयर द फुटेज. मतलब टेलीविज़न चैनल ने डिसाइड किया कि इस फुटेज को हम लोग हमारे स्क्रीन पे नहीं दिखाएंगे या हमारे चैनल पे नहीं दिखाएंगे. दैट इज़ कॉल्ड ग्रिसली, राइट? आवर फर्स्ट इडियोमैटिक एक्सप्रेशन फॉर टुडे इज देयर आर अदर फिश इन द सी. So what is the meaning of this idiomatic expression? There are other fish in the sea. It means it's okay to miss this opportunity, others will arise. Okay,
तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आपको दिखे या मिले, कहीं पे आप लिखने जा रहे हो, कहीं पे ऑप्शंस आपको मिले हैं, इसका मीनिंग क्या है कि और भी इट्स ओके टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी। मतलब अगर आप किसी अच्छे काम के लिए, किसी अच्छे रीज़न के लिए किसी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हो, कोई बात नहीं, यू कैन मिस इट बिकॉज अपॉर्चुनिटीज तो आते रहते हैं, यू विल गेट नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, राइट। इट्स नॉट दैट योर लाइफ इज एंडिंग, यू आर नेक्स्ट डे से आपको और अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलने वाले, आपके पास नहीं आने वाले, राइट। सो दैट इज नॉट द राइट थिंग। सो इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, इफ यू गेट दिस काइंड ऑफ अ सेंटेंस जहाँ पे ऐसे सिचुएशन है कि आपको लिखना पड़ रहा है कि अपॉर्चुनिटी एक हो गया तो क्या हुआ, नेक्स्ट में और आने वाला है, राइट, देयर यू कैन यूज दिस idiomatic expression that there are other fish in the sea. Okay, so our next vocab is esoteric. Esoteric is an adjective जिसका meaning होता है and you can say in English known about or understood by very few people. Esoteric का meaning होता है कि ऐसा कोई चीज़ जो कि बहुत कम लोग समझते हैं या कम लोग जानते हैं, right, that is called esoteric. Synonyms can be abstruse, obscure, arcane. Antonyms can be simple, familiar. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Gerald was an 8-year-old genius who had esoteric interests much different from kids of a similar age. तो जेराल्ड को क्या था? जेराल्ड वॉज अ 8-year-old जीनियस, 8 साल का जीनियस बच्चा था जेराल्ड, हु हैड एसोटेरिक इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही अलग तरीके के इंटरेस्ट था जेराल्ड के अंदर, जो कि मतलब एक 8 साल के जो सिमिलर एज के उसके जो फ्रेंड्स होंगे उनमें ऐसे इंटरेस्ट नहीं है जैसे इंटरेस्ट जेराल्ड में है. दैट मीन्स ही वाज अ जीनियस ऑफ अ काइंड, राइट? सो दैट इज कॉल्ड एसोटेरिक. Our next vocab is splurge. Splurge is a verb जिसका meaning, splurge is also a word जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं. It's a very common word जिसका meaning होता है पैसे उड़ाना, और you can say to spend extravagantly or ostentatiously. Synonyms इसके हो सकते हैं squander, fling, dissipate, disburse. These can be the synonyms. Opposite words can be accumulate, hoard, conserve, preserve. These can be the opposite words. So how to use it in a sentence? Should I splurge on the really nice camera or just buy one of the cheap models? तो क्या मैं बहुत ही एक ब्यूटीफुल कैमरा में मैं स्प्लर्ज करूँ, मतलब पैसा खर्च करूँ, और जस्ट बाई वन ऑफ द चीप मॉडल्स, या फिर कोई भी एक चीप मॉडल मैं खरीद लेती हूँ? What should I do? Right, that is called splurge. Our next word is refractory. Refractory is an adjective जिसका meaning होता है दुराग्रही, or you can say in English stubborn or unmanageable. So something which is stubborn or unmanageable, that is called refractory. Synonyms can be recalcitrant, obstreperous, insubordinate. Opposite words can be obedient, manageable, compliant. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? To make his life easier, the store owner decided to fire the refractory workers who were difficult to manage. तो अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए ये जो स्टोर ओनर था, मतलब स्टोर का जो मालिक था, दुकान का जो मालिक था, इन्होंने क्या डिसाइड किया? जो रिफ्रैक्टरी वर्कर्स है, मतलब जो वर्कर्स अनमैनेजेबल है, मतलब जो बात नहीं मानते हैं, थोड़े ज़िद्दी है, ऐसे वर्कर्स को वो निकाल देंगे, फायर कर देंगे, राइट? हु आर डिफ़िकल्ट टू मैनेज, मतलब जिनको मैनेज करना उसके लिए डिफ़िकल्ट है, ऐसे वर्कर्स को वो निकाल देंगे. Right, so our next vocab is protagonist. Protagonist, this is again a word which we have done frequently. Protagonist का meaning होता है मुख्य पात्र और मुख्य चरित्र. The leading character or one of the major characteristics in the play, film or novel. ओके, तो कोई भी प्ले या फिर कोई भी फिल्म, कोई भी नोवेल में जो मुख्य चरित्र होता है उसको प्रोटैगोनिस्ट कहते हैं. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं सपोर्टर, अपहोल्डर. एंटोनिम्स हो सकते हैं ओपोनेंट. हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस? द प्रोटैगोनिस्ट वाज विलिंग टू गिव हिज लाइफ फॉर द वुमन ही लव्ड. तो ये जो प्रोटैगोनिस्ट था ये क्या कर रहा था? ये राज़ी हो गया था कि जिसको वो प्यार करता था उसके लिए वो अपनी ज़िंदगी भी दे दे. Right, that is called protagonist. Our next idiomatic expression is there is a method to his madness. What is the meaning of this idiomatic expression? There is a method to his madness.
इट मीन्स ही सीम्स क्रेजी बट एक्चुअली ही इज क्लेवर. इसका मीनिंग ये है कि हम लोग बोलते हैं ना कि ये पागल है लेकिन इसके दिमाग, इसके अंदर बहुत सारा बुद्धि है, ये चालाक पागल है. राइट, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस. सो ही सीम्स क्रेजी, इसको देख के लगता है कि ये पागल है लेकिन एक्चुअली ही इज वेरी क्लेवर. ही इज क्लेवर. He has very something in his mind. He has very clarity in his mind. So he is clever. He is wise. Okay. So but he seems crazy. Maybe he seems crazy. इसको देख के लगता है पागल है लेकिन actually वो पागल नहीं है. Right. So our next vocabulary is flawed. So what is the meaning of flawed? Flawed is an adjective जिसका meaning होता है having or characterized by a fundamental weakness or imperfection. तो फ्लॉ से आया है फ्लॉड. सो व्हाट इज़ अ फ्लॉ? फ्लॉ मीन्स आपके अंदर अगर कोई गलती हो या फिर आपसे कोई गलती हो जाए या फिर आपके अंदर अगर कोई खामी हो, इम्परफेक्शन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लॉ. सिनोनिम्स इसके हो सकते हैं अनसाउंड, डिफेक्टिव. एंटोनिम्स हो सकता है साउंड. राइट, सेंटेंस में कैसे यूज करें? द ओनली प्रॉब्लम इज दैट हिज रिसर्च वॉज फ्लॉड. तो एक ही प्रॉब्लम था, छोटा सा, छोटा नहीं था, यही प्रॉब्लम था कि उसका रिसर्च फ्लॉड हो गया था. मतलब उसका रिसर्च में थोड़ा फ्लॉ था, इम्परफेक्शन था, थोड़ा प्रॉब्लम था. राइट, दैट इज कॉल्ड फ्लॉड. आवर नेक्स्ट वोकैब इज जुवेनाइल. जुवेनाइल इज एन एडजेक्टिव जिसका मीनिंग हिंदी में होता है किशोर. यू कैन से अ चाइल्डहुड, दैट इज कॉल्ड जुवेनाइल स्टेज. Right, or English you can say for or relating to young people. Right, young people are called juvenile. You know the term juvenile diabetes, okay, juvenile diseases, right, जो young छोटे बच्चों को होता है diseases, that is called juvenile. Synonyms इसके हो सकते हैं young, teenage. Antonyms हो सकता है adult. How to use it in a sentence? My 40-year-old brother and his friends are still pulling juvenile pranks on each other. तो मेरे जो 40 साल के भैया हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं वो लोग एक दूसरे के अंदर अभी तक जुवेनाइल प्रैंक्स एक दूसरे के साथ करते रहते हैं. मतलब बच्चों वाले प्रैंक्स. राइट, अभी तक वो लोग करते रहते हैं. अब नेक्स्ट वोकैब इज डायलेमा. डायलेमा इज अ नाउन जिसका मीनिंग हिंदी में होता है दुविधा. दैट इज कॉल्ड डायलेमा. Or you can say in English, a situation in which a difficult choice has to be made between two or more alternatives. तो ऐसा एक सिचुएशन जहाँ पे आपके पास दो या दो से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हैं, ऑप्शंस हैं. आपको एक चॉइस करना है क्योंकि आप दो नाव पे पार रख के नहीं चल सकते. राइट, इन बंगाली वी से दो नौकाएं पा दिए चौलाटा वेरी डिफिकल्ट. यू कैन एनी टाइम यू कैन फॉल ऑफ. ओके, so to avoid that, if you don't want to fall off, you should take your leg, you should take your foot from you should come in one boat. Okay, you should not balance your two legs in two boats. You should come in one boat and stand in one boat. So that is a dilemma when you are facing difficulty picking one option. That is called a dilemma. Synonyms can be quandary, predicament. Antonyms can be benefit, a boon. These can be the opposite words. How to use it in a sentence? Our teacher presented us with a dilemma when he shared that we could choose where to take our yearly field trip. तो टीचर ने हमें एक डायलेमा में डाल दिया था जब उन्होंने कहा कि हम लोग चूज़ कर सकते हैं कि हम लोगों को ईयरली जो फील्ड ट्रिप मिलता है वो हम लोग कहाँ करें, ये हम लोग चूज़ कर सकते हैं. राइट, आवर लास्ट वोकैब फॉर टुडे इज ड्रोव्स. ड्रोव्स इज अ नाउन जिसका मीनिंग हिंदी में होता है रेर. In English, you can say a herd or flock of animals being driven in a body. So you know droves. Drove means a herd of something, a group of animals, or a flock of, or a pack of something. These are all the synonyms: herd, flock, pack, fold. When animals are driven in groups, right? They are taken from one place to another. That is called droves. Antonyms can be trickles. You can say how to use it in a sentence. The medical board will be back in droves tomorrow, he informed her. तो उसने इसको इन्फॉर्म किया कि मेडिकल बोर्ड कल फिर से वापस आएगा in droves. That means they will come in a group, right? That is called droves. Our last idiomatic expression for today is there is no such thing as a free lunch, right? So what is the meaning of this idiomatic expression? There is no such thing as a free lunch. मतलब ऐसा कोई चीज़ नहीं है फ्री लंच.
राइट तो आपने गलत सुना होगा, फ्री लंच आपको नहीं मिलने वाला, ऐसा कोई चीज़ नहीं है. When can you use this idiomatic expression? Nothing is entirely free. तो जब भी आपको ये समझाना पड़े कि कोई भी चीज़ पूरा फ्री नहीं होता है, इट्स नथिंग इज टोटली फ्री, राइट. सो why we are saying that nothing is totally free? Because if somebody says that this is free, you can find a small conditions apply there. Right, so that is called there is nothing no such thing as a free lunch. So guys, this was all about your top 10 vocabulary words. I hope you liked the session. See you next day. Till then, take care. Goodbye.